Very good morning to everyone. The following are the balances of MS Mrs. Bharat Limited as on 31 March 2017. So we will be doing this sum. Trial balance is given. Debit balance means asset and expenses. Credit balance means liability and incomes. So premises, it's a asset. Plant is the asset. स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक, ये डिपेंड करेगा व्हेन वी विल चेक द एडजस्टमेंट. एंड देन डेटर्स इज गिवन. डेटर is a asset, goodwill is a asset, bank is a asset. कॉल सीनियर जो है we will be deducting from the share capital. Call scenarios means outstanding amount on call, so the outstanding amount on share. So this we will minus from the share capital. We have interim dividend paid. ये भी बैलेंस शीट में आएगा appropriation में. Appropriation हम surplus में से करते हैं in the balance sheet. Reserve and surplus. Surplus means P&L account. P&L account में हम last year का balance current बॉट डाउन करके करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ऐड करते हैं एंड वी लेस दिस एप्रोप्रिएशन. ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड पेड. देन वी हैव परचेसेस. Purchases will come in the profit and loss account. Share issue expense, it is other non-current asset. हम इसको other current asset में भी दिखा सकते हैं, assuming it to be of short-term nature, or we can show it as other non-current asset. This is a fictitious asset. Then we have wages, employee benefit expense. Then we have general expense. General expense के लिए अलग कोई specific head नहीं है, so it will come under other expense. Then we have salaries, employee benefit, bad debts, other expense, interest, debit, debenture, interest paid. This is financial cost. Financial cost. कोई भी टाइप का interest, bank charges कुछ भी रहेगा, so it is finance cost. Then in the credit side, we have share capital. Share capital will come under equity, shareholders fund. 12% debenture is our non-current liability, long-term borrowings. Profit and loss account. Profit and loss account is surplus, reserves and surplus में इसको surplus बोलते हैं. Then we have, ये मतलब last year का profit है. Then we have bills payable, creditors, both are trade payable. Sales is our this one income में आएगा sales. Then we have sales के बाद we have sales is revenue from operation. Then we have reserve, general reserve, and we have bad debts provision of last year. ये हम current year में से adjust करेंगे 35,000. Then we have closing stock. Stock on 31/3/2017 9,50,000. Closing stock मतलब opening stock से closing stock less करेंगे तो we will get changes in inventory. We will get changes in inventory. Then we have depreciation on plant. So plant को we will highlight because it has a depreciation. Write off 5,000 from share issue expense. So share issue expense को भी write off करना है 5,000. So this will also come under other expense and other non-current asset में बाकी का amount आएगा 45,000. 50,000 में 5,000 write off करना है. Remaining will be shown in the asset side. Other non-current asset. Interest on debenture is due for 6 months. So interest, debenture interest में outstanding है, पूरा पे नहीं किया है, 6 month का outstanding है. So that we will come when we will check here. Debenture for
12% ऑफ 30 lakhs कितना है फॉर 6 month हम निकालेंगे तो वी विल गेट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6/12 करेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा और इसको भी हैव टू हाईलाइट एंड इवन ये डिबेंचर को भी हाईलाइट कर लेते इसका हमें 6 month का ड्यू निकालना है देन just for understanding I have highlighted here then daters में 5% doubtful debts है so dater I have highlighted and provide for income tax at 50%. So income tax provision for tax is 50%. Now what we will prepare, let us first prepare the revenue statement, that is statement of profit and loss account. So profit and loss account for year ended 31st March 2017. Insert how many column? 3 because हमें क्या चाहिए? Amount चाहिए, notes to account चाहिए and we will require the particulars. So here call the this one as revenue from operations. Revenue from operations में what we will write in the credit side हमें income देखना है. In the credit side business income we can see only one, that is sales 41,50,000. मैं इसके लिए notes नहीं बनाऊंगी because only one is there. So I will show your sales 41,50,000. Is there any other income other than sale? क्या हमें कोई और इनकम दिख रहा है? Is there any other income other than sale? Is there any other income given in the question? Only sales is the income. ये bad debts provision तो हम other expenses में adjust करेंगे with bad debts. So there is no other income apart from sale. So total revenue या total is how much? 41,50,000. Now less, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? We less the expenses. The expenses में सबसे पहले expenses में सबसे पहले हम raw material, cost of raw material consumed निकालते, पर रॉ मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो वी विल शो अबाउट परचेसेस. हम क्या बताएंगे? परचेसेस. परचेसेस में कोई एडजस्टमेंट है क्या? इज देयर एनी एडजस्टमेंट इन परचेसेस? देयर इज नो एडजस्टमेंट इन परचेस. तो नोट बनाने का जरूरत नहीं है. परचेस में से हाउ मच इट इज? 18,50,000. then B we have after purchase we have changes in inventory. We have changes in inventories. Changes in inventory. इसके लिए एक नोट बनाते हैं. नोट नंबर 1. We will go to notes to account. Notes to account में first note changes in inventories. कैसे निकालते चेंजेस इन इन्वेंट्री? ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक less closing stock. How much is opening stock given in the question?
7,50,000 and 9,50,000. So यहाँ पे we will write 7,50,000 minus ब्रैकेट में बिकॉज लेस करना है 9,50,000. 7,50,000 divide 7,50,000 minus 9,50,000. तो क्या आंसर आएगा? What answer we will get? We will get minus 2 lakhs. तो यहाँ पे हम लिखेंगे we will get the minus answer minus 2 lakhs. After this, we write employee benefit expenses. Employee benefit expenses. Employee benefit expenses के लिए भी let us prepare one more note because यहाँ पे दो employee benefit expense है, wages and salaries. We have two things. So when we have two things, we will prepare notes to account because एक रहेगा तो directly लिख सकते हैं, but we have two things, employee benefit expenses. Employee benefit expenses में we have wages and we have salaries. तो wages का amount कितना है? Let us check. 9,79,800. 9,79,800. And how much is the other one? Salary 2,02,250. 2,02,250. Add both, total कितना होता है? Add both of them. How much total are you getting? Are you getting 11,82,050? 11,82,050. So I will write here 11,82,050. इसके बाद we have finance cost. इसके बाद we have finance cost. Finance cost. Finance cost में there is a adjustment because interest में finance cost में सिर्फ interest आना चाहिए, but interest में there is a this one adjustment. देखो, interest on debenture is due for 6 months, so we have an adjustment here. So what I will do, third one, finance cost. Finance cost में how much they have given? क्या आएगा finance cost में? Interest on debentures they have given 1,80,000. इसमें add करेंगे outstanding. पर वो कैसे निकालना है? What is the amount of debentures in the question? 30 lakhs into 12%. 30 lakhs into 12% because rate is 12% into due for 6 months. कितना होता है 6 month? Calculate करो. 6 month due मतलब how much it is coming to? 30 lakhs into 12% into 6 upon 12. Is that coming to 1,80,000? So total कितना हो जाएगा? 1,80,000. It is coming to 3,60,000. But total finance cost will be 3,60,000. इसके बाद we have depreciation and amortization expenses. इसके लिए क्वेश्चन में what is given about depreciation? Depreciation plant पे 15%. Only one thing is there. So only one is there. तो मैं यहाँ पे ही निकाल लेती हूँ. 33 lakhs plant का 15%. How much is it coming to? No need to prepare a note. निकालो. How much are you getting?
33 lakhs is the amount of plant. उसमें we have to prepare 15%. So 33 lakhs into 15% is how much? Are you getting 4,95,000? So this is also done. Now last one, last expense what we have is अदर एक्सपेंसेस. अब जो भी एक्सपेंसेस बच गया वो सब कुछ अदर एक्सपेंसेस में आएगा. अदर एक्सपेंसेस में व्हाट डू वी हैव? अदर एक्सपेंसेस में लेट अस सी व्हाट डू वी हैव. ये सब हो गया. शेयर इशू एक्सपेंस 5,000 राइट ऑफ होने वाला है. दैट विल कम. जनरल एक्सपेंस विल कम एंड बैड डेट्स विल कम. जो बच गया वो. So finance cost के बाद next one, fourth one, other expenses. So what is that? Share issue expenses. क्वेश्चन में बोला है 50,000 में माइनस करना है 50,000 में माइनस करना है 5,000. So how much it will come? Sorry. यहाँ पे बोला गया है कि 5,000 राइट ऑफ करो. आई विल राइट शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. कितना राइट ऑफ हो रहा है? 5,000. और रिमेनिंग 45,000. 50,000 में 5,000 माइनस करके 45,000 विल कम इन द बैलेंस शीट. देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेस. जनरल एक्सपेंस कितना है? जनरल एक्सपेंस का अमाउंट क्या है? 68,350. So I will write 68,350. Then we have bad debts. Bad debts कितना अमाउंट है? Let us see. Bad debts is 21,100. So I will write here 21,100. इसमें मैं ऐड करूंगी new RDD, which is 5% of debtors. New RDD debtors का they have told 5% doubtful debt. So debtor is 8,70,000. इसका 5% निकालो. So I will show the working here. 8,70,000 का 5%. How much is it coming? 8,70,000 का 5%. How much is the न्यू RDD? 43,500. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा द नेक्स्ट लाइन. आई विल राइट 64,600. इसमें से लेस करना है old RDD which is given in the trial balance credit side 35,000. That's how much? 35,000 minus करो. How much are you getting? 29,600. 29,600. Now add all the three and see other expenses kitna 29,600, 68,350 and 5,000 is equal to 1,02,950. Is equal to 1,02,950. So last one 1,02,950. Is it correct? 1,02,950. So इसके साथ हमें मिलेगा total expenses. Add all of them. How much are you getting total expenses? सबको ऐड करो. 18,50,000 minus 2,00,000 plus 11,82,050 plus 3,60,000 plus 4,95,000 plus 1,02,950. You should get 37,90,000. अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स
प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज व्हाट, अगर हम इसको ए मानते हैं एंड इसको बी, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिलेगा बाई ए माइनस बी. हाउ मच इट विल बी? 3,60,000. इसमें से लेस करेंगे. Is there anything given about provision for tax? Provision for tax के बारे में कुछ दिया है. Provision for tax is how much? 50% of what? 3,60,000 का 50, मतलब profit before tax का 50%. So this will come as 1,80,000. and हमें मिलेगा profit after tax. Profit after tax as 1,80,000. So with this, profit and loss account is done. Now what we will do? Now we will prepare balance sheet as on 31/3/2017. बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. सेम मैनर में 3 कॉलम्स रहेगा. फर्स्ट वन इज rupees with notes to account and पहला वाला इज particulars, notes and rupees. तो हमने हमारे लाइबिलिटी साइड को क्या बोला है? सॉरी, व्हाट डू वी कॉल इट? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में व्हाट कम्स? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम लिखते हैं इक्विटी पहले. इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में हम स्मॉल ए दो चीज आता है. शेयर होल्डर हैज देयर राइट ऑन 2 थिंग्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो ये दोनों के लिए अभी हम नोट बनाएंगे. कंटिन्यूएशन 4th के बाद 5 and 6. तो 5 and 6 दोनों नोट्स वी विल प्रिपेयर. तो 4 के बाद नेक्स्ट नोट इज 5th one, which is share capital. Share capital given in the question and call scenario also is given. तो share capital से माइनस करेंगे 75,000 call scenario. So share capital, how much is the amount of share capital? Nothing is given about the number of shares. तो हमें नॉर्मली भी अज्यूम, तो भी हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है. तो 40 लाख में कितना शेयर्स रहेगा? 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10. ऐसे ही अज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज नथिंग इज गिवन. इसमें से वी विल लेस, पैसा नहीं मिला, कॉल स्कीम arrears, which is equal to 75,000. So how much money we have received on calls? It is 39,25,000. तो शेयर कैपिटल का अमाउंट मिला 39,25,000. Now reserves and surplus. Let me check which reserve is there. Profit and loss account is surplus and reserve है जनरल रिजर्व 2,50,000. सिर्फ दो ही चीज है, हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया. 6th one reserves and surplus में फर्स्ट वन आएगा जनरल रिजर्व, अमाउंट इज 2,50,000. फिर सरप्लस, सरप्लस में आएगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, सो ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इसे लिख सकते हैं। चलिए सरप्लस के नीचे आई विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Profit and loss account का opening balance is how much it is given in the trial balance last year का profit 2,62,500, 2,62, I will write it in the inner column, 2,62,500। इसमें ऐड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट। current year profit just now we got it is 1,80,000, correct? 1,80,000 अभी मिला, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। हाउ मच इज द टोटल अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन? दोनों को ऐड करो, ऐड बोथ ऑफ देम, 4,42,500, 4,42,500। इसमें से लेस करेंगे, क्या एप्रोप्रिएशन दिया है? दो ही एप्रोप्रिएशन होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड। सो हियर दे हैव गिवन इंटरिम डिविडेंड। हाउ मच इज द इंटरिम डिविडेंड? क्वेश्चन में देखो इंटरिम डिविडेंड पेड दिया है 3,92,500। तो माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से 3,92,500 पे कर दिया एज डिविडेंड। सो कितना पैसा बचा? 4,42,500 में से 3,92,500 पे कर दिया। सो हाउ मच इज रिजर्व्स एंड सरप्लस? 2,50,000 जनरल रिजर्व, 50,000 इज द बैलेंस लेफ्ट इन P&L अकाउंट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3 lakhs। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना मिला? 3 lakhs। So we will write reserves and surplus 3 lakhs. Reserves and surplus 3 lakhs. इसके बाद we come to the non-current liability. Non-current liabilities, इसमें हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे पास? शेयर कैपिटल नहीं, ये तो रिजर्व है, ये ट्रेड पेबल है। बचा क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग? 30 lakhs डिबेंचर। सो वी हैव ओनली वन। तो इसी इज देयर अ रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर नोट्स? सिर्फ एक ही है तो मैं नहीं बना रही हूँ नोट्स। सो आई विल राइट 12% डिबेंचर्स 30 lakhs। बाद लाइबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं है। So I will, और only current liabilities है। So current liabilities में I will write small a होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, कोई दूसरा लोन नहीं है जो शॉर्ट टर्म नेचर का, तो मैं वो लिखूंगी नहीं। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आता है, तो दो है, तो आई हैव टू प्रिपेयर अ नोट। तो आई विल राइट ट्रेड पेबल्स, इसमें दो चीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। दोनों का अमाउंट देखना पड़ेगा कितना है। क्रेडिटर्स 37 lakh, 3,70,000 and 4 lakh, 3,70,000 and 4 lakhs। यहाँ पे लिखेंगे 4 lakhs, यहाँ लिखेंगे 3,70,000। दोनों को ऐड करो, वी विल गेट द ट्रेड पेबल 7,70,000, 7,70,000। दोनों को ऐड करने पे आई विल राइट हियर ट्रेड पेबल इज 7,70,000।
इसके बाद हम इधर आता है अदर करंट, ट्रेड पेबल के बाद आता है अदर करंट लाइबिलिटीज। ना लाइबिलिटी साइड में ना करंट लाइबिलिटी में ओनली लाइक 4 हेड्स आते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसमें कोई भी शॉर्ट टर्म नेचर का लोन आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। दूसरा ट्रेड पेबल जिसमें क्रेडिटर बिल पेबल आते हैं। फिर अदर करंट लाइबिलिटी जिसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा तो आएगा। तो यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मैं इसके लिए अलग से नोट नहीं बनाने वाली हूँ, बिकॉज ओनली वन थिंग इज देयर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो मैं वही आई विल डायरेक्टली राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 1,80,000। 6 महीने का ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया था, तो अभी उसका सेकेंड इफेक्ट वी विल गिव। एंड वी हैव लास्ट वन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म नेचर का प्रोविजन डालेंगे तो ये भी मैं इसका भी नोट नहीं बनाने वाली हूँ। सिर्फ मैंने किसका नोट बनाया, ट्रेड पेबल का प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आया, इस as equal to profit 50% tax था। We have already seen that's how much, 1,80,000। से वो भी मैंने लिख लिया। ये दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट टोटल। एंड देन नेक्स्ट वन, सेकेंड रोमन, that is assets। assets type को we call it as assets। now here ये हो गया। इसके बाद असेट्स आया। असेट्स दो टाइप का है, नॉन करंट, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में हमने नॉन करंट असेट को बोला है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हमने डिवाइड किया एज tangible and intangible। tangible and intangible। तो tangible कितना है, intangible कितना है, इसके लिए क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। intangible तो we have only one, goodwill 2,50,000। intangible में तो हमारे पास सिर्फ goodwill है, that is 2,50,000। 2,50,000। टैंजिबल में एक है या एक से ज्यादा फिक्स असेट है। फिक्स असेट को ही हम टैंजिबल, जो दोस असेट व्हिच हैव डेप्रिसिएशन इज व्हाट यू से टैंजिबल फिक्स असेट व्हिच वी कैन सी, टच एंड फील। तो यहाँ पे दो टैंजिबल फिक्स असेट के बाद नहीं है। प्रीमाइसेस 30,72,000 एंड प्लांट 33 lakhs। इसमें डेप्रिसिएशन भी है। So I'll have to go to the next adjustment. Eighth one, tangible asset, tangible assets। tangible assets में हमारे पास premises है। We have premises। How much is premises? Premises we just saw, it is 30,72,000। Then we have plant, plant mean it is 33 lakhs, but there is, what is there, 33 lakhs, but depreciation is there। 33 lakhs है plant, but depreciation है 15%, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। कितना है depreciation? depreciation इधर ऊपर ही किया हुआ है 15%, 4,95,000। यहाँ पे भी निकाल सकते, 33 lakhs का 15% डेप्रीसिएशन। माइनस करके कितना आ रहे, माइनस करके कितना आ रहे, 28,05,000।
सो दोनों को ऐड करो, यू विल गेट द टोटल टैंजिबल असेट्स 58,77,000। दोनों को ऐड किया 58,77,007, राइट? 58,77,000 and intangible only one is there, goodwill. So I will directly, I have written, Chetu, you can show in bracket here, you want for your understanding, goodwill. इसके बाद it is there any other, is there any other thing given like other non-current asset? इसमें fictitious asset लिखते हैं, जितना we know fictitious asset is there. So we can show it in the here, which one is it? eighth one चेता इसको दिखा सकते हैं नोट में 9th one, नहीं दिखाना है तो वहीं पे लिख लेते, बिकॉज ओनली वन थिंग इज दैट अदर नॉन करंट असेट में शेयर इशू एक्सपेंसेस 50,000 था, 5,000 राइट ऑफ किया, 50,000 was there, 5,000 राइट ऑफ किया, तो हाउ मच इज द अमाउंट? 45,000. So only one is there, that directly लिखना है 45,000. 45,000. तो इसके बाद we have last one we have what we have current, non-current asset के बाद current assets. current asset में we have a inventories. So inventories दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में देखो, inventories दिया है stock 7,50,000. So there is 7,50,000 inventories, 7,50,000. उसके बाद we have इन्वेंट्रीज के बाद डेटर्स है ना, बिल रिसीवेबल है नहीं, पर डेटर्स में दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ आरडीडी, which हमने पीएनएल अकाउंट में ही किया है. सो नेक्स्ट वन वी विल राइट हियर विल कॉल इट बी में ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल में कितना है? ट्रेड रिसीवेबल डेटर का अमाउंट कितना है? इट इज 8,70,000. say right, 8,70,000 minus 5%, which is what? RDD. So how much is it coming? RDD minus करके how much debtors are we getting? Debtors we are getting, minusing RDD, we are getting it 8,26,500. इसके बाद what we have? इसके बाद we have cash and cash equivalent. क्वेश्चन में दिया ना 5% RDD. So cash and cash equivalent. Let us see what is there about cash and cash equivalent. हमारे पास ये कैश बैलेंस, that is yes, बैंक बैलेंस 4,06,500. 4,06,500.
6,500. With this, there is no other asset what we have missed out. Let us just check once again in the trial balance. Have we missed any asset? सब लिखा, expenses भी सब लिखा, यहाँ पे भी everything is been noted down. तो इसके साथ this sum is over. Just we need to calculate the total. How much is the total coming of balance sheet? 83,55,000. And here also we are getting 83,55. Sorry, 83,55,000. With this, the sum is done. Thank you so much.